established a cluster innovation center at University of Delhi that has launched extraordinary degree programs in humanities and in innovation with IT and mathematics. His current position and past positions held so far, some of them are Distinguished Academic Consultant, Middlesex University, London, Chancellor K.R. Mangalam University, Vice Chancellor, University of Delhi, Adjunct Professor, University of Houston, Texas, Distinguished Senior Fellow, Advanced Hackspace Imperial College, London, Honorary Professor, IIT Delhi. He has also been member Scientific Advisory Committee to Union Cabinet Government of India, and he has also been the president of Ramanujan Mathematical Society, one of the most respectable mathematics society in India. We welcome you today to the house, sir. We also have amongst us our keynote speaker, Professor A. Ramaraju. Professor A. Ramaraju teaches philosophy at the Indian Institute of Technology, Tirupati. He has a PhD in philosophy from IIT Kanpur and taught at Goa University and the University of Hyderabad. His publications include Debate in Indian Philosophy, Classical, Colonial, Contemporary, Debating Gandhi, a Reader. He has edited Enduring Colonialism, a Classical Presence and a Modern Absence in Indian Philosophy, Modernity in Indian Social Theory, Philosophy and India, Ancestors, Outsiders, and Predecessors, Debating Vivekananda, a Reader. He's also editor of Desire and Liberation, biography of a text by Vadedara Chandidas. So he's an accomplished scholar. We welcome you for our keynote speaker today, sir. Thank you so much for being here. Today, we are going to be discussing Gandhian Satyagraha for 21st century. Sitting on the stage, we also have amongst us our patron and our leader, Professor Manoj Sinha, our principal. Our collaborating department teacher in charge, Dr. Rajendra Dayal from Political Science Department, and convener Gandhi Study Circle, Dr. Satish Jha. I would request all our guests to please initiate today's program by lighting the lamp. Thank you, sir. We have with us in the background performance by the Music Society students.
Uh, Thank you. That was the students of Music Society. Amongst singers was Yashna, Astha, Srishti, Shruti, Shivanjal, Shivansh, Diya, Soumya, Yash. On tabla, we had Mohit. Keyboard was by Arya, and flute was played by Kartike. Thank you so much, students. On this auspicious occasion, I'd like to mention that we are the youngest college of the university. Thank you so much for gracing us with your presence, sir, and encouraging us. To mark this moment, I would request Professor Manoj Sinha, our principal, to please felicitate the guest with a shawl. A small token to remember us by, and a planter that signifies growth, just like us. A small token of appreciation and something to remember us by. Thank you, sir. I would request Dr. Rajendra Dayal, sir, to please felicitate our keynote speaker for the day. A shawl. A small token of appreciation by Gandhi Study Circle. A planter that symbolizes our growth and our budding relationship from here on. Thank you, sir. Moving on with the program, I would like to mention that we also have amongst our guests Professor Anil Dutt Mishra, Dr. Mithilesh Kumar Jha, and Mr. Sanjeev Gupta, an eminent and senior bureaucrat from Delhi government. We welcome you all, sir. I would now request our Gandhi Study Circle convener, Dr. Satish Kumar Jha, to please address the House and introduce the theme for the day. Thank you, Namita. Good morning and namaskar. On behalf of Gandhi Study Circle, Rajbhat College, I welcome all of you to this national seminar on Gandhian Satyagraha for 21st century. It is my pleasure and privilege to welcome two eminent scholars today in this conference, this seminar. Professor Dinesh Singh, the chief guest for today's function, our former Vice Chancellor, an eminent mathematician, though by training he is mathematician, but by orientation and at heart he is Gandhian. So I welcome you, sir. I know very well that how he has been trying to, work for Swaraj in ideas by reviving
the Indian knowledge system, particularly in our times. So thank you, sir, for sparing your valuable time for us. I also feel privileged to have amongst us Professor Raghuram Raju, an eminent philosopher and a thinker who has contributed immensely to enrich Indian philosophy and Indian political and social thinking. In fact, his work on Gandhi, debating Gandhi, is widely acclaimed and widely followed. So thank you, sir, for being with us this morning. In fact, this idea to have this seminar on Satyagraha, Gandhian Satyagraha for 21st century, we decided to have these 2 days academic engagement, largely on account of the fact that, we are commemorating the Bardoli Satyagraha of Gandhi, which he launched in 1928 with Sardar Patel in month of February. But besides that, this Satyagraha discourse is acquiring a lot of significance in our times. In fact, I am reminded of that famous speech which Ambedkar delivered on the floor of the Constituent Assembly, when he admonished the future generation, particularly about the threat which the discourse of Satyagraha might pose to the future generation in a democratic setup. Because at that time, when we are fighting against the Britishers, Satyagraha discourse was associated with the concept of breaking laws and civil disobedience. But he argued that when we'll be a free nation, when we'll have a democratic system, then this type of politics might become a grammar of anarchy. But that has not happened. What we have seen over the years in the last 7 decades, that the roots of democratic institutions and democratic politics have become stronger, but at the same time, people's faith in this democratic action, that is Satyagraha, has increased manifold. Not only in India, world over. From Occupy Wall Street, you can name any number of actions, non-violent political and social actions, where people have taken recourse to this Gandhian discourse of Satyagraha. So much so that even India, in the last 2-3 decades, we can see new social movements of the Chipko movement, the Narmada Bachao Andolan, the farmers' protest, and there are many instances where people have used this mode of protest to vent their anger in a very peaceful, non-violent manner. And that has helped the decision makers, the rulers, Indian state, to take note of the social discontent, and thereby it has helped the process of democratization of the society. So unlike the earlier expectation that the Satyagraha will become a grammar of anarchy, what we have witnessed, that Satyagraha has in fact helped developing the root of democratic institutions in India. Now, one thing is to be remembered, that this Gandhian discourse of Satyagraha is product of Gandhi's long engagement with Indian philosophy. Of course, he acknowledged Thoreau, particularly the piece which he read while traveling in a train, and he says that turned his entire thinking about this mode of protest. But no one can deny that the Indian philosophy has contributed immensely in inspiring and influencing Gandhi so far as his discourse of Satyagraha is concerned. And here I would like to mention that when we run our eyes on the Western philosophy and Western political thought, in fact, we find that the Western political thinking and Western political thought is replete with ideas and writings on democratic political institutions. But we don't have a corresponding thinking and corresponding work on democratic action. And here perhaps the Indian discourse contributes so significantly that the entire world is taking note of this aspect of our social and political life. So therefore, we decided to have this 2 days engagement. There are a lot of sessions lined up on a lot of issues, including the electoral democracy and Satyagraha. Because at one point of time, it was believed that both are, binaries,
antagonistic relationship exists between the two, but we have seen that how they are basically moving in tandem. Similarly, we have a session on the history of Satyagraha. We have a session on Satyagraha and cultural resistance. We have a session on Gandhi and Gandhigiri, Satyagraha discourse in movies and theaters. Over the years, very creative art has demonstrated that how this can popularize this discourse among the people. And then, of course, we have the last session where we have very eminent scholars, including Professor Bhiku Parekh, who would, reflecting that entire panel will be reflecting on reimagining Satyagraha for 21st century. That how we can reimagine in the today's context. Because things are changing. Reality has changed. The nature of science and technology has changed. Particularly the time when Gandhi was writing on it and the time when we are living today, there is a vast difference between the two. Gandhi talked about Satyagraha at a time when the truth was the quest of that generation. That's why Satyagraha was seen as standing firm for the sake of truth, using only force of love. But today we are living in age of post-truth. We are living in the age of fake news. We are living in the age of communication revolution. So there are challenges. How to reimagine this discourse in today's context where it can become more potent tool in the hands of people to deepen the roots of democratic society and democratic process. So thank you, sir, for being with us, the two eminent scholars and dignitaries. I'm also delighted to see many old friends. In fact, Dr. Suresh Gupta, senior bureaucrat, the Delhi government, my contemporary Anil Dutt Mishra, who himself is a Gandhian scholar, Dr. Mithilesh Jha, who has come all the way from Guwahati. He teaches in IIT Guwahati, and many others, colleagues and students. Thank you. Thank you, sir. Now that we have contextualized the theme, a very, very important deliberation is still due. I would request our leader, without his encouragement, guidance, and leadership, none of this would have been possible. I would request you, sir, to formally welcome all our guests for the day. Thank you, Namita. Good morning, everyone. Respected Professor Dinesh Singh, our previous Vice Chancellor and mentor to many of us here in Delhi University. Professor Raju, who has come all the way to give his keynote address to us for this two-day seminar, sponsored by the ICSSR and hosted by our Gandhi Study Circle of Aryabhatta College. My friend and colleague, Dr. Satish Jha, who has immense energy, which has come out in very fruitful ways this year. This is the second seminar on Gandhi that he is hosting in this academic session, and very successfully so, with so many scholars put together in this college that I'm beginning to feel that we should have a separate Gandhian Studies department in the college now. Thank you, Satishji, and also my senior colleague, Dr. Rajendra Dayal, who is teacher in charge of the political science department and collaborating for this seminar. My friend Anil Dutt Mishra, Mithilesh Jha ji, and Suresh Gupta ji, thank you for being here, and all the members of the Gandhi Studies Circle and their students. It's my proud privilege to welcome all of you this morning to the Aryabhatta College for this two-day deliberation, which is kind of a follow-up of the three-day international seminar that we have already had, where we had a lot of Gandhian thinkers, commentators, writers, already commenting on various aspects, and that was on the relevance part. I'm reminded of the times when, for a period of 5-6 years, I was teaching Gandhian thought and action in Department of Political Science, Delhi University. And one of the FAQs, or the frequently asked question that the students have at various times with the teachers, one of them was कि सर ये सारा moral और ethical high ground आप बताते रहते हैं गांधी का, वो तो ठीक है, लेकिन इन सब का क्या relevance रह गया है आज
21st century में. We are a generation which is changing. We are a generation of this kind, that kind. And thankfully, those questions came because those questions become the cause of us thinking as to how to relate Gandhian thought and Gandhi's principles to our modern life and see the relevance at various places. And one could pick up anything, something as vast as international relations, and see the relevance of Gandhi over there. And I'll refrain from speaking on Gandhi because that part has already been done by my friend Satyagraha ji, and for 2 days we'll be discussing that. But allow me to introduce you to Aryabhat College today with so many guests here. Because today we have the creator of Aryabhat College here. Dinesh Singh ji is the one who thought about even conceptualizing the college in his mind first, and then implementing it on the ground and creating the college, and giving me the charge of being the first principal of the college, with very stern, polite, encouraging, but very stern warning to make a good college out of it, good institution out of it. You know, I was, before he became Vice Chancellor, he was still the Director South Campus in 2009. When I got selected in the panel of principals for Hindu College. And unfortunately, the final decision was not to make me the principal. It was a 16-year senior, even he was my teacher at that time, Vinay Srivastava, very eminent professor of anthropology in Delhi University. He was made the principal of Hindu College. And so I had a slight obsession with Hindu College that I have to go and get it. So when Professor Dinesh Singh appointed me as principal of Aryabhat College, he told me, एक बात बताओ मनोज, कि हिंदू कॉलेज का प्रिंसिपल बन के करोगे क्या, वहां क्या करने को रह गया है. It's an institution that is 100 years old, all of you know that, and there is very little scope for doing something fresh over there. You just have to keep running it the way it is running, and therefore I'll give you a college where you will get to do everything that you want to do, and if you have the right vision, the right energy to implement things, you will be able to do it. I don't know, I mean, I become like a child, like you students in front of him, but I'm as keen as you are to show your internal assessment to your various teachers that teach you. मैं भी आज उसी तरह एक्साइटेड हूँ कि उनको दिखा पाऊँ कि मैंने 7 स्टोरी की बिल्डिंग्स बना ली हैं 2, और बाकी 2 बिल्डिंग में ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं. उन्होंने हमें 5 ऑनर्स कोर्सेज दिए थे, हम अब 11 चलाते हैं इस कॉलेज में. उन 11 में से 4 का हम 2 सेक्शन भी खोल चुके हैं यहाँ पर, और उसके अलावा हम 2 प्रोग्राम्स चलाते हैं, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम. और ये सब करते हुए from being a teacher strength of 42 teachers, we are now 92 permanent teachers in this college. उनके समय में जब उन्होंने हैंडओवर किया तो हमारे पास सिर्फ 14 एम्प्लॉइज थे नॉन टीचिंग में. आज हमारे पास 82 एम्प्लॉइज हैं जो इस कॉलेज में काम कर रहे हैं. So it's sort of a report I'm giving to the person who handed over this ragtag place, creating it and telling me that you'll never be short of resources. He's not always been the Vice Chancellor, but what he said remained true. Somehow, anyhow, I don't know from where, but we have got resources. We have done what we wanted to do, more or less. Everything does not go in a linear fashion, but with all the bumps and other things, the college has progressed. And the proudest thing which I want to say to him is that he is very attached to the Indian knowledge system and its propagation also. And Aryabhat did not just come just like that. If you, when you go out of this room, when you open that door over there is a tree right outside it. वो कदम्ब का वृक्ष है, और वो वृक्ष इन्होंने ही लगाया था आज से 9 साल पहले. अब बहुत बड़ा हो गया है. 4 seasons of fruits have come over there. और इन्होंने लगाया इसीलिए था, कदम कह करके हमसे मंगवाया था, क्योंकि आर्यभट्ट अपने आर्यभट्टियम में लिखते हैं कि, और याद रखिए कि उन्होंने 426 ईस्वी में लिखा था
उसमें लिखते हैं कि पृथ्वी का आकार कदम्ब के फल की तरह होता है। कदम का फल यहाँ पर आप में से जिसको शौक हो आप सीजन में आकर देख लीजिएगा, गोलाकार होता है। यानी हम गैलीलियो को फांसी वासी पड़ती रहती थी, हमने आर्यभट्ट को फांसी नहीं दी, ये कहने के लिए कि पृथ्वी गोल है। एंड देयरफॉर दैट आल्सो फॉलोज कि मैथमेटिक्स के तो गुरु हैं ही दिनेश सिंह जी, बट he inspired us to go on a path where we had to somehow anyhow, and he was very impatient at that time, because नया नया कॉलेज लेने के बाद और 2.5 साल तक मैं पार्लियामेंट के धक्के खा रहा था for as small a thing as roster, and many things happened in the college at that time. तो कई चीजों के लिए समय नहीं मिलता था। डीन ऑफ कॉलेजेस ने मुझे बुलाकर कहा कि कम से कम एक वेधशाला तो बना लो अपने कॉलेज में, कुछ कंप्यूटर पर आर्यभट्ट की इस खोज के बारे में कुछ ना कुछ आते रहना चाहिए आपके यहाँ से। टुडे we have a coffee table book on Aryabhatta that we have produced. There are at least 2 research volumes that we have produced on Aryabhatta. And now, and this is a news for Professor Dinesh Singh, this college is an IKS center, like 16 other centers all over India. Maybe IIT Guwahati is one. Like them, there are only 17 centers all over India for Indian knowledge system study, the Ministry of Education, and Aryabhatta College is one of them. Of the 17 centers all over India, Aryabhatta College is one which has been awarded the project for mathematics and astronomy. खगोल शास्त्र और मैथमेटिक्स के लिए यही कॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का IKS सेंटर है, आर्यभट्ट कॉलेज। सर, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन कि वी आर नॉट फॉरगॉटन द इनिशियल expectation that you had from the college, and the college body, the whole college is working towards making the college an excellent center of learning and not just learning. Now, this seminar on Satyagraha is a step in that direction. We keep on interacting with each other academically at all times, but we also need principles. We also need values in our system. And therefore, to remember Gandhi is to pump back a lot of it into the developmental paradigm that we decide for everything. This institution, the Delhi University, and समाज, पूरे समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आर्यभट्ट की इस भूमि पर, और I hope for the next 2 days all our scholars will have a very nice interaction with our students, with our faculty members. Thank you so much. Thank you, sir. On that note, I would like to say, 100 चांद भी आ जाएं यहाँ तो वो बात नहीं रहेगी। सिर्फ आपके आने से इस जगह की रौनक बढ़ेगी। I hope you are proud of what you see here today, sir. I would request you to please address the House today. The welcome address by the Chief Guest, Professor Dinesh Singh. Professor Raju, my younger brother and principal of this college, Manoj, Dr. Dayal, Jhaji, distinguished guests, colleagues, and dear students. मैं आभारी हूं कि मुझे आज अवसर मिला यहाँ उपस्थित होने का, इसलिए कि यहाँ जब भी मैं आया हूं मुझे एक प्रकार का संतोष अंदर से उत्पन्न होता है, और संतोष के साथ साथ हर्ष उल्लास भी होता है। अगर भारत को आगे प्रगति करनी है और अगर भारत को उन सपनों को साकार बनाना है जो गांधी जी ने देखा था, तो शिक्षा की भूमिका को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। और शिक्षा बिना अच्छी संस्थाओं के
आगे बढ़ नहीं सकती है। तो मैं मनोज को, उनके सहयोगियों को बधाई भी देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसी सक्षम संस्था उन्होंने स्थापित कर दी है कि भारत की जो यात्रा है, जिसको मैं एक प्रकार से महायज्ञ मानता हूं, उसमें इनकी जो आहुति है इस संस्था की, ये बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसलिए मैं आभारी हूं कि मुझे अवसर मिला यहां पर आज उपस्थित होने का। गांधी जी मुझको बहुत प्रिय है। आई लाइक गांधी जी वेरी मच। आई एम वेरी डीपली अटैच्ड टू हिम। परंतु मैं न गांधीवादी हूं। मैं तो अपनी सारी त्रुटियों को, अपनी सारी कमियों को जानता हूं, जितनी भी खामियां हैं मेरे अंदर। इसलिए मैं जानता हूं कि मैं उस दृष्टिकोण से गांधीवादी तो नहीं कहला सकता। न ही मैं विशेषज्ञ हूं। आई एम नॉट अ स्कॉलर ऑन गांधी। बट यस, आई हैव दिस डीप अबाइडिंग लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, reverence towards Gandhi ji. And why is that? अगर आपको लगता हो, और मैं प्रधान रूप से यहाँ छात्रों को ही संबोधित कर रहा हूँ, बाकी सब तो यहाँ एक्सपर्ट्स हैं सर, मैं कुछ ऐसी कोई नई बात कहूंगा नहीं, इसलिए आप अगर चाहें तो आंख कान सब बंद कर सकते हैं। कि गांधी जी क्यों आज प्रासंगिक है आप लोगों के लिए, ये ऐसे अवसर पर हमें इस पे थोड़ा सा गहराई से सोचना चाहिए। सत्याग्रह की बात है। पहले तो मैं नहीं जानता कि कितने लोग आप में से, छात्रों की बात कर रहा हूं, जानते हैं कि सत्याग्रह शब्द कहां से आया। गांधी जी ने ही उसकी रचना की, और अकेले नहीं। गांधी कभी भी कोई बात को लेकर आगे बढ़ते थे तो तमाम लोगों से सलाह मशवरा करते थे। He was a truly democratic person. तो सत्याग्रह सदाग्रह से आरंभ में लोग सोच रहे थे, जब गांधी जी ने अपने जो आंदोलन वगैरह आरंभ किए, तो जिस भावना को लेकर चले, जिन सिद्धांतों पे आधारित था, अहिंसा, सत्य, तो उसको नाम देने की जब बात आई तो मैं भूल रहा हूं, गांधी जी के बड़े करीबी सहयोगी थे, उन्होंने सदाग्रह कहा था। और गांधी जी ने फिर उसको थोड़ा सा सुधार के सत्याग्रह कर दिया। सत्य से आग्रह करना, सत्य के आधार पे आग्रह करना। एक अंग्रेजी अमेरिकन स्कॉलर रहे, एक्चुअली साइकोलॉजी के प्रोफेसर हार्वर्ड में, एरिक एच एरिक्सन, उन्होंने एक किताब लिखी है गांधी जी पे, गांधीज ट्रूथ ऑन द ओरिजिन्स ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस। मुझे वो बहुत पसंद है, मिलिटेंट नॉन वायलेंस। यू नो, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डायकॉटमी हियर, मिलिटेंट नॉन वायलेंस। वो किताब मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, यही दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र था, तब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा था। बहुत ही गहरा अध्ययन किया था गांधी को उन्होंने, एक साइको एनालिसिस की है गांधी की। और मिलिटेंट नॉन वायलेंस कन्वेज द थीम of what Gandhi's life was about. गांधी के जीवन को आप अगर गहराई से समझना चाहें, तो ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने आजादी के लिए इतना बड़ा आंदोलन चलाया, ये किया, वो किया, परंतु मूल रूप से गांधी अपने अंदर बसे ईश्वर को जगा रहे थे। वे ईश्वर की खोज में थे। वो ईश्वर की खोज में थे, और मूल रूप से जो भी उन्होंने जीवन में किया, whatever he did in life, it was in search of that God whom he equated with truth. उन्होंने सत्य से ईश्वर को जोड़ा, और उनका सत्याग्रह अपने अंतरात्मा के साथ था। उनके अंदर जितनी भी कमियां थी, ईश्वर जो हम लोगों को बनाता है, रचता है, तो दोष गुण सब कुछ मिला के भेजता है।
देखिए, ये दुनिया में हम जब आते हैं धीरे धीरे हमको आभास होने लगता है, हर कोई अपने को थोड़ा बहुत पहचान लेता है कि उसके अंदर क्या गुण है, अवगुण क्या है। गांधी ने बड़े गहराई से पहचाना और पहचान के रुक नहीं गए। उन्होंने अपने आप अंदर, अपने अंतःकरण में एक सत्याग्रह को चलाया। जीवन पर्यंत गांधी जी दिन प्रतिदिन उस सत्याग्रह के आधार पर अपने को सुधार रहे थे, ऊपर उठा रहे उस ईश्वर की ओर। वो करने के लिए, उस सुधार को लाने के लिए उन्होंने इस धरती पे, इस समाज में, इस संसार में जो भी किया, जितनी भी क्रांतिकारी कार्यक्रम उन्होंने चलाए, उसका कारण यही था कि उनके अंतःकरण की जो उनकी आवाज थी, अंतरात्मा की, जिसको मैं अपनी अंतर्ध्वनि भी कहता हूं, उससे वो उलझ रहे थे, अपनी कमियों को दूर कर रहे थे। वो चाहते थे कि वो हर तरह से जो है इनको खत्म करें और ईश्वर से एक हो जाए। और गांधी जी ने कहा, लिखा है, मैं नहीं जानता, अगर गांधी को समझना है ना, तमाम चीजें बड़े स्कॉलर्स ने लिखा है, मेरे जैसे लोग आके कुछ बोल भी जाते हैं, कि अगर वाकई गांधी को समझना है तो उनकी आत्मकथा पढ़ो और धीरे धीरे पढ़ो, उसको ग्रहण करो, डाइजेस्ट इट, और गांधी समझ में आ जाएंगे। कब सत्याग्रह उनका आरंभ हुआ? मेरा अंदाज है 7-8 साल के थे जब उन्होंने एक नाटक देखा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और उस नाटक ने उनके अंदर वो सोच जगा दी, वो अंदर जो कश्मकश है उसको उत्पन्न कर दिया। इतना प्रभाव पड़ा उस नाटक का कि जब वो घर आते हैं, ये बालक, तो वे प्रतिज्ञा करते हैं। हरिश्चंद्र के पात्र का जो वहां उन्होंने जो देखा, दर्शन किया नाटक में, ऐसा प्रभाव पड़ा कि यह व्यक्ति सत्य के अधीन था, निष्ठा से निर्भीक होकर, धृति के साथ, कि कुछ भी हो जाए मैं सत्य को नहीं त्यागूंगा। उसने गांधी जी के अंदर जो सत्य का ईश्वर बसा था उसको धीरे धीरे जगाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसी रात प्रतिज्ञा की कि अब आजीवन मैं सत्य के अधीन रहूंगा, सत्य की खोज में जुड़ा रहूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये पहला कदम था उनके सत्याग्रह का, पहला कदम। उसके बाद आप गांधी का जीवन देख लीजिए, वो सत्य के ही दृष्टिकोण से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, थ्रू द लेंस ऑफ ट्रूथ ही वो समझ में आते हैं, थ्रू आउट। और वो सत्याग्रह को उन्होंने धरती पे उतारा, चाहे दक्षिण अफ्रीका में, चाहे भारत में, तो फिर उसी लिए कि वो सत्य की खोज में थे, अपने आप को खोज रहे थे, ये बाहरी क्रियाओं से, कि वो सत्य मुझे मिल जाए। तो अपने लिखते हैं गांधी, मैंने मोरारजी देसाई से पूछा था, वे भारत के प्रधानमंत्री थे, गांधीवादी थे, और मैं उनके कुछ करीब था। तो वो कुछ, जब प्रधानमंत्री थे, मैं अक्सर उनके, मैं छात्र था विश्वविद्यालय में, मुझे बुला लेते थे। सवेरे वो 4 बजे उठते थे और करीब 5 बजे वो चरखा काटते थे। तो जैसे हम यंग लोगों की आदत होती है, मैं मजाक उड़ाता था कि ये गांधी चरखा तो ऐसे ही चलाते थे, आंदोलन था, भारत को आजाद करना था, अब आप इसको क्या मैकेनिकली गांधीवादी बन रहे हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि क्यों करते हैं, मुस्कुराते थे, और एक ही बात उन्होंने कही कि जब तक खुद नहीं काटोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैं क्यों काटता हूं। दैट इज द गांधीयन वे। इयर्स लेटर मैंने चरखे को थोड़ा अपनाया, और तब गांधी की बातें समझ में आने लगी। गांधी कहते थे, ये आध्यात्म का मार्ग है, इससे शुद्धि होती है, आत्मशुद्धि होती है, चरित्र का निर्माण होता है, मन शांत हो जाता है, ये प्रार्थना है, सारे गुण उसमें है चरखा काटने में। और जब मैं वाइस चांसलर था
और मेरे कार्यकाल में तमाम तरह की चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, क्रांति भी आई एक प्रकार की। कभी कभी मन अस्थिर जब होने लगता था तो मेरे अंदर वाले ऑफिस में मैंने एक चरखा रखा था, और आधा घंटा अगर मैं उसको काट लेता था तो मन स्थिर हो जाता था, मजबूत हो जाता था। तो मैं मनोज आपसे आग्रह करूंगा कि आप, और ये मैंने इसके तमाम प्रयोग किए हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में गांधी भवन में चरखा काटने का कार्यक्रम मैंने आरंभ कर दिया। जो चाहे आके ले, मैं एक गांधीवादी महिला थी, बुजुर्ग थी, उनसे मैंने आग्रह किया, वो आती थी रोज। तमाम छात्र आते थे, न उसकी कोई परीक्षा, चाहो तो ले लो सर्टिफिकेट, लेकिन गांधीवादी लोग सर्टिफिकेट के पीछे नहीं भागते। खैर, मैं अपने अनुभवों की बात आपको बताना चाहता हूं। मुझे याद है कि एक मुझे छात्रा मिली, मैं अक्सर जाता था वहां। उसने कहा कि सर, मैं माइग्रेन से पीड़ित थी, 2-3 साल से बुरी दशा थी मेरी, तमाम दवाइयां सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया था, कोई फर्क नहीं आ रहा था। 2-2.5 महीने से मैं चरखा काट रही हूं, मेरा माइग्रेन अदृश्य हो गया है। ऐसी बातें मुझे कितने बच्चों ने बताई। एक और लड़का मिला, उसने मुझे कहा कि मैं डिप्रेशन से पीड़ित था, उसका प्रकोप मेरे ऊपर हावी था, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन। उसने भी कहा कि दवाइयां काम नहीं आती थी। उसने भी कहा कि सर, मुझे अब 3-4 महीने हुए हैं और मेरा डिप्रेशन चला गया, एकदम लापता हो गया है चरखा काटते काटते। बीकॉम ऑनर्स का टॉपर था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, 3rd ईयर में। हमसे कहता है कि सर, हर साल मैंने टॉप किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स में, लेकिन मैं दिशाहीन था, मुझे पता ही नहीं था जीवन का ध्येय क्या है, मैं किस तरह से अपने को स्थिर बना के अपने को समझूं। चरखा काटते काटते मुझे रास्ता दिखने लगा है। गांधी ने तो इतना समझाया है चरखे के बारे में, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि हम सब गांधी की इतनी बातें करते हैं, अगर गांधी को समझना है, कुछ ग्रहण करना है, चरखा काट के देखो। मैंने कई स्कूलों में चलवाया है दिल्ली में चरखे का कार्यक्रम, जहां भी लोगों ने किया है सबने इसी प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर की है। मैं क्यों नहीं समझ पाता हूं कि हम जब गांधी की बात करते हैं तो चरखा क्यों नहीं लगाते। आजकल भारत सरकार ने मुझे एक जिम्मेदारी दे दी, जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर की उच्च शिक्षा का प्रबंध कर रहा हूं। तो मैंने एक और चीज की मनोज, जम्मू यूनिवर्सिटी में एक गांधी के सिद्धांतों पे और जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रयोग थे उसके आधार पर हमने एक नई डिग्री कायम की है। उस डिग्री का जो नाम है, शीर्षक है, उसका नाम ही है डिजाइन योर डिग्री। दैट्स द वे गांधी वांटेड एजुकेशन। डिग्री का शीर्षक है डिजाइन योर डिग्री, और कोई नाम नहीं है, डिजाइन योर डिग्री, बैचलर्स इन डिजाइन योर डिग्री। उसके मार्ग से आप कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, उसी डिग्री में आप इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं, हिंदी के भी विशेषज्ञ बन सकते हैं। परंतु उसका जो पथ है जिस पे आपको चलना होगा वो व्यवहारिक है। द पेडागॉजी इज वेरी डिफरेंट। ब्लैक बोर्ड को हटा दिया है हमने। गांधी शिक्षा के संदर्भ में, वो भी वहां भी सत्याग्रह की ही बात है, शिक्षा के संबंध में कहते थे, और गांधी किसी चीज पे कभी टिप्पणी नहीं करते थे जब तक उन्होंने प्रयोग करके सीख न लिया हो। शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने पहले दक्षिण अफ्रीका में स्कूल चलाया, खुद चलाते थे, संचालन करते थे। फिर जब भारत आए तो अहमदाबाद में विश्वविद्यालय कायम किया जो अब तक चलता है। जब हम हर साल ट्रेन भेजते थे, पहली यात्रा मैंने भेजी थी ट्रेन की 1000 छात्राओं की, तो पहले वो उधर ही गए थे, गांधी जी के आश्रम, फिर उनके विश्वविद्यालय में, गुजरात विद्यापीठ। फिर उन्होंने वर्धा में एक पॉलिटेक्निक कायम किया महिलाओं के लिए, जिसके गवर्निंग बॉडी पे भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को रखा, बोस, सीवी रमन, सबको रखा था। लोग कहते हैं वो विज्ञान के विपरीत चलते थे, उल्टा सीधा सोचते थे। ऐसे ही गांधी के बारे में कुछ कहना हो तो लोग कुछ भी कह देते हैं बिना सोचे समझे। और इन सारे प्रयोगों के बाद गांधी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, कि इन एजुकेशन व्हाट यू डू विद योर हैंड्स विल एंटर योर हार्ट। व्यवहारिकता ले आओ। भारत की परंपरा इसी पे आधारित थी।
शिक्षा की परंपरा, इट वॉज ऑल एक्शन बेस्ड। ब्लैक बोर्ड की कोई, उस समय जब ब्लैक बोर्ड होता भी नहीं था, तब हमने इतने ऊंचे ऊंचे आविष्कार किए। युवा पीढ़ी के लोग आते थे, आर्यभट्ट तो 21 साल के थे जब उन्होंने ये सारे आविष्कार किए थे। अब जिसको देख लीजिए, भास्कराचार्य बहुत यंग थे। क्या जादू था, यही पद्धति जो थी, ये गांधी ने उसको फिर दोहराया है, लेकिन हम तो ध्यान ही नहीं देते हैं। ब्लैक बोर्ड लेकर, नोट्स लेकर, रटा रटा के दरिद्र कोटि के परीक्षा ले लेकर बच्चे को बर्बाद कर देते हैं। मैं आईआईटी की गवर्निंग बॉडी में 5 वर्ष रहा, बॉम्बे की। छात्रों से बहुत बात करता था। हर छात्र मुझसे कहता था कि हम तो व्यर्थ यहाँ पढ़ने आए, हमको सीखने को कुछ नहीं मिलता है। परीक्षा देते रहते हैं, हर हर सप्ताह परीक्षा पे परीक्षा पे परीक्षा, सीखा कुछ नहीं है। इसीलिए भारत कई मामलों में ज्ञान के क्षेत्र में पीछे रह जाता है। पहले तो नहीं था, तो हमें सोचना चाहिए गांधी ने उस पर कितना, नई तालीम की बात उन्होंने की। और जम्मू में फिर मैंने बात कही, देखिए गांधी ये नहीं कहते थे कि मुझे मैकेनिकली नकल करो मेरी, कि चरखा, इसीलिए मोरारजी ने नहीं कहा चरखा कातो, मैं इसलिए कह रहा हूं करो करो। जब खुद करोगे तो समझ में आएगा। तो वहां एक मैंने प्रयोग किया है अभी वो प्रयोग आरंभ हुआ है, कि अगर आज गांधी जी होते तो आज के दृष्टिकोण से वो अपना आश्रम का निर्माण कैसे करते हैं। आई कॉल्ड इट अ स्मार्ट आश्रम। मैं मनोज से आग्रह करूंगा कि चरखा और स्मार्ट आश्रम बच्चों को दे दीजिए प्रोजेक्ट, ये खुद कर लेंगे, ये हमसे कहीं ज्यादा सक्षम है। हाउ वुड यू मेक अ स्मार्ट आश्रम इफ गांधी वाज अलाइव टुडे, हाउ वुड ही हैव डन इट? उसी तरह करते जैसे उन्होंने साबरमती में बनाया, या कुछ और करते? क्या सोलर सेल लगाते? क्या वाईफाई का इस्तेमाल करते? क्या लैपटॉप रखते? थिंक अबाउट दीज थिंग्स। और गांधी, फिर कह रहा हूं, अपने को सुधारने में लगे थे। उनका सत्याग्रह अपने ऊपर था, बाकी चीजें अपने आप होती थी। लेकिन जब करने लगोगे, तब जो वैष्णव जन तेने कही जे पीठ पर आई जाने, समझ में आएगा कि ईश्वर का बंदा तो वही है जो औरों का दुख जाने, उसे अपना समझे। और कैसे? सोचो गांधी क्या करते थे। जब चंपारण गए और वहां जब उन्होंने शुरू किया, देखिए गांधी बड़े सिस्टमैटिक थे। ये थोड़े था कि अच्छा ये पहन लो, चलो खादी, और इधर चल पड़ो, भीड़ इकट्ठा करो, रैली कर लो, पदयात्रा कर लो, ये नहीं था। चंपारण वो गए क्योंकि वहां का जो किसान था बुरी तरह से पीड़ित था। अंग्रेजों ने ऐसा उनके ऊपर बना रखा था अत्याचार का, जुल्म का जो है दौर, कि उसका बुरा हाल था। तो गांधी ने कहा कि सबसे पहले मैं डेटा एकत्रित करूंगा। थिंक अबाउट दिस डेटा। ये गांधी कह रहा है द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। चंपारण में पूरी टीम ले गए, कस्तूरबा को भी ले गए, बहुत लोग गए, आचार्य कृपलानी गए, राजन बाबू गए, सब लोग गए। क्या करते थे? एक एक गांव के निवासी से एक एक बात का डेटा एकत्रित करने लगे। इतना ज्यादा डेटा उन्होंने एकत्रित किया कि वाइस रॉय के लिए असंभव हो गया उनकी बात को नकार, एविडेंस पेश किया उन्होंने। परंतु साथ में जो सत्याग्रह अंदर था वो क्या था कि सत्य 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 को जगाओ। तो सत्य तुम्हें दिख रहा है कि कोई गरीब है, कठिनाई में है, बीमार है, तो इस सत्य को, इस सत्य से ही तो पकड़ते हैं। तो एक महिला को उन्होंने देखा कि बहुत मैली साड़ी पहनी है। अभी तो गांधी भारत से पूरी तरह परिचित भी नहीं थे, तो उनको उसको उन्होंने हल्का सा डांटा भी किया, थोड़ा एडमॉनिश किया कि तुम धोती क्यों नहीं अपनी साड़ी। वैष्णव जन की बात कर रहा हूं। उसने कहा अगर धोऊंगी तो पहनूंगी क्या, मेरे पास तो एक ही है वस्त्र। उस दिन गांधी ने वस्त्र पहनना त्याग दिया कि मैं कोई सिला वस्त्र नहीं पहनूंगा, ऊपर तो पहनूंगा ही नहीं, बस धोती बांधते थे, वो भी अपने हाथ की का। उस दिन से त्याग दिया। क्यों क्यों त्यागा उन्होंने? क्योंकि वो सत्याग्रह उनका जग रहा था अपने ऊपर, कि अगर तुम उनका सुधार चाहते हो तो उनकी तरह जब तक सोचोगे नहीं, रहोगे नहीं, तब तक तुम उनको समझोगे कैसे, सुधार कैसे लाओगे, और तब तुम्हारा सत्य और प्रबल हो जाएगा। और होता गया प्रबल, मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि
इस सत्याग्रह का मार्ग जो उन्होंने अपनाया, उसी की वजह से भारत के लिए उन्होंने सोचा कि आरंभ में उन्होंने नहीं कहा कि अंग्रेज जाएं यहां से, बिल्कुल नहीं। कहे ठीक है, रहने दो, हम सुधारते हैं, हम अपने को सुधारें, हम ऐसा कर लें कि हमारे यहाँ चीजें अच्छी हो जाएं। करते 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 जब सत्य और उनको दिखने लगा और अंदर जागती रही आवाज कि तुम कैसे चैन से रह सकते हो, यही सत्याग्रह है। तुम कैसे चैन से रह सकते हो जब तुम्हारे भाई बंधु इस दशा में हैं। भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचे, तब तक तो वो एक प्रकार से निर्वस्त्र हो चुके थे, बस वही धोती बांधते थे और हाथ का सिला हुआ ओढ़ लेते थे ऊपर से। तो एक बालक आया, कहता है कि बापू तुम कुर्ता क्यों नहीं पहनते हो, नंगे बदन क्यों रहते हो? तो गांधी ने कहा कि मैं, मेरे पास है नहीं। तो बालक ने कहा, अरे मेरी माँ बड़ा अच्छा सिलती है, मैं उससे कहता हूं तुम्हारे लिए बना देगी। तो गांधी ने कहा, तो माँ से कहना कि मेरे भाई बहन हैं, उनके पास भी नहीं है, उनके लिए भी बना दे। तो पूछा उसने कितने हैं? तो भारत की आबादी जो जनसंख्या थी, गांधी ने बता दी। वो कोई वोट नहीं ले रहे थे, तो बालक से बात कर रहे थे, मगर ही फेल्ट दैट कि ये वाकई मेरे भाई बंधु हैं। लेकिन उसके लिए जब तक चरित्र का निर्माण नहीं करोगे, अपने को प्रबल नहीं बनाओगे, सत्य के अधीन नहीं रहोगे, तब तक निर्भीक नहीं होगे, निष्ठा नहीं आएगी। नहीं तो सिर्फ वोट के लेने में रह जाओगे तुम। तो ये गांधी से सीखो। कभी भी वो आदमी पीछे नहीं हटा। गांधी के ऊपर 12 बार अटेम्प्ट किए थे टू किल हिम। डिड यू नो दैट? कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जो है नॉन वायलेंस अपनाए क्योंकि कायरता थी उनकी। तरस आती है। देयर वर 12 अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ। एक बार तो उनकी गाड़ी पे हैंड ग्रेनेड फेंका गया, संजोग से गांधी बच गए। फूटा बॉम्ब, गाड़ी ध्वस्त हो गई, बच गए गांधी। हटे पीछे? बिल्कुल नहीं, हटे ही नहीं। अगर यह नहीं है शौर्य तो क्या है? व्हाट विल यू कॉल दैट? पर क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुझे ये करना है तो बाधाएं तो आती हैं जीवन में। किसके नहीं आई है बाधाएं? श्री राम के जीवन में बाधा। अगर सीखना है कुछ श्री राम से तो ये सीखो कि बाधाएं तो आएंगी ही आएंगी। तुम्हारा तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा धर्म है कि शबरी के जूठे बेर खाओ और अपने को उठाओ। अपना भी उद्धार होगा, समाज का उद्धार होगा। अपने को उठाओ ऊपर। वही गांधी करते रहे करते रहे करते रहे। और क्या लिखते हैं कि मैं नहीं जानता, मेरे लिए ईश्वर सत्य ही है। और मेरे मार्ग में जब मैं चलता रहा हूं इतने दिन, तो मुझे कभी 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 उस महासत्य की झलक मिल जाती है। इट्स अ मिस्टिक एक्सपीरियंस। उस महासत्य की झलक मिल जाती है। और जब मिलती है, जब उसके तो उसका तो तेज है हमारे सूर्य देव से करोड़ों गुना अधिक है। The effulgence of that supreme truth that I occasionally glimpse, its effulgence is 1,000,000 times more than that of our sun. वो सत्य के करीब जाने लगे थे, सत्य जिसको वो महाईश्वर मानते थे। और किस मार्ग से? अपने अंदर के सत्याग्रह से। अपनी जो त्रुटियां थी, अपनी जो खामियां थी, अपनी कमियां थी, उसके विरुद्ध प्रतिरोध में जो आते थे रास्ते में उनके आत्म निर्माण के लिए, उनके साथ सत्याग्रह करते करते, इसीलिए समाज में भी उनको सत्याग्रह करना है। तो गांधी को समझो, अपनाओ, और इन जो फॉर्मेलिटीज है, खादी ये वो, उसकी चिंता नहीं करो। जिस चीज में तुम्हारी आस्था है वही तुम्हारा सत्य है, उसके साथ जुड़ जाओ और तुम गांधी के मार्ग में चलने लगोगे। निर्भीक होकर निष्ठा के साथ जुड़ जाओ, तुम गांधी के मार्ग में चलने लगोगे और तुम अपने रूप से एक सत्याग्रह करने लगोगे। यही कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. It was indeed an extremely interesting and enlightening address. On that note, I would request our keynote speaker, Professor A. Ramaraju, to please address the House with his
talk on the topic re-examination of the relationship between theory and action, the theory of non-violence in Bhagavad Gita and Satyagraha in Mahatma Gandhi. Sir. Respected Professor Dinesh Singh, the chief guest, Professor Manoj Sinha, the principal, Professor Satish Jha, Professor Rajendra Dayal, and friends. It's indeed a pleasure and honor to speak in front of you. Let me begin by prefacing my presentation with this frame. The frame that I want to set is the Bardoli Satyagraha of February 1928, which Mahatma Gandhi started along with Sardar Vallabhbhai Patel. Now, there are different, almost after so many years of Satyagraha, sitting in a college, though young but vibrant, of one of the old universities, Delhi University. What can we do about this great moment? One thing that we can do is to celebrate it, and we must celebrate it. The other one we can do is to extend the Satyagraha and use it in different walks of life, as has been done. And Professor Jha mentioned Chipko movement and things like that. And then the other one is to revise or add something to this great event, because we can learn many things about this event during these long years of that event. And the reason why I think it is necessary to revise or add something new to this great event is available in the life of Gandhi, in the writings of Gandhi. He is not a person who is contented with repeating the past. He is the one who made a great use of revising, contesting, taking, leaving, adding, modifying the past. I think that that sense of Gandhi is what interests me. And it's in this context, I wanted to indulge in taking a note from the concept note, which says Gandhi was no theorist through pen. He was a man of action. Indeed, he was a man of action. But one of the rarest things that happened in India is that there are good writers in the world, there are good politicians in the world, but modern India produced people who are both writers and politicians. Gandhi's 100 works, Ambedkar's 30 volumes, Sri Aurobindo's 30 volumes, Swami Vivekananda's 9+1, and what have you. This is one of the remarkable things, unprecedented in the world history. So, if there is no theory, he is not a man of theory, that point raised in the concept note greatly enticed me. And then I started thinking about what to do with it. But approaching Gandhi is a very tricky business. It is a tricky business because whenever I discuss Gandhi, many of them
rightly so, say that you should always say Gandhi ji, not Gandhi. You're talking as if Gandhi is your friend, next door. And so, but using a vernacular path, I do this thing saying that I remove G from the right side. I also remove G from the left side. And what remains is Gandhi for me. He is an Andhi. He is an Andhi. He is a storm. And that storm, approaching the storm, is a very, very, very difficult task, but worth pursuing. And this is how I wanted to pursue it. That is, how do I understand an action called Satyagraha, which in fact drew the attention of people like Lenin, Mao Zedong, and others. How do I understand it? One way of understanding it is through these categories in philosophy. Namely, we have a theory and we put that theory into practice to what is called as ought to is. Or we have a reality and we draw morality from it. The empiricist followed it. The previous one is followed by the rationalist, that is, derive ought from is. There is a Hegelian approach of a dialectics between is and ought, give and take. But on a close reading, you will realize that Gandhi does not fall into any of these three, which are rampantly discussed in moral philosophy of the West. He falls outside. And why he falls outside is what I'm going to discuss with you. So, there is a theory of Satyagraha in Gandhi, but that theory is not readily available. Philosophy across the world perform two tasks. One task is to work with ready-made philosophy. The other task is to make philosophy ready-made. Saint Augustine, Saint Aquinas in the West, Shankara, Nagarjuna, Dharmakirti, and others in India have made philosophy ready. Okay. First two people did it for Christianity. The others, Shankara did it for Advaita, Nagarjuna and Dharmakirti, and others did it for Buddhism. So one of the important jobs that can be done in India is to take the second path. And that is a part that I take. So how do you make theory for Satyagraha? How do you make it ready? How do you make it ready? Now, Gandhi is not providing a new theory to Satyagraha. That's not what you find. You don't find Gandhi giving a systematic account of what is the theoretical framework for this action called Satyagraha. There are sporadic statements here and there. There are very, very, contradictory stances if you scan through his 100 works. Now, there is not one single view that he said and did not contradict it. Okay, so consistency is not something which is a good tool to approach him. So you have to approach him with a different methodology, and there is a need to be careful about that. So there are two problems that Gandhi faces. One is that he is not giving a new theory for Satyagraha. He is giving a old theory, but the old theory is already theorized by his predecessor. And who is his predecessor? Lokmanya Balagangadhar Tilak. Lokmanya Balagangadhar Tilak is one of the first persons who came up with a new notion of nation for India. Entirely new notion of nationalism,
which falls outside the canon of nationalism of the West. And what did he do it? He said the following, that India, if it has to be nation, Western nation is based on dismantling their past and building their nation on 4 modern pillars. And those modern pillars are radical political ideas, modern science, technology, and industry. Okay, that's how they made the nation. Now, if you look at India, you have nothing to follow that, because British used all these 3 to loot India, loot India. Okay, so Indian peasant has to look for different kinds of things. And Balagangadhar Tilak, in his monumental work, grossly neglected, printed with horrible printing, horrible typographical mistakes, even today circulated shamelessly and all over the place. Okay, undertakes this arduous job. This is one of the first manifesto of a new national movement. Now, what does Balagangadhar Tilak do it? Balagangadhar Tilak uses a Mimamsa tradition, and where he says that there are different kinds of vadas. I quote, if the statement made in the Arthanuvada are consistent with the actual state of things, it is called Anuvada. If inconsistent, it is called Gunanuvada. And if it is neither, it is called Bhutarthavada. Arthavada is common word, and there are the 3 subdivisions of Arthavada. That means that is the category. But the point that he makes, that he borrows things from Mimamsa, he says, what is the beginning of a text? Gita. In the beginning, Arjuna was reluctant to fight war. And what did Lord Krishna ask Arjuna? He asked him to fight war. And if Lord Krishna asked Arjuna to fight war, and what did Arjuna do? Arjuna fought war. War involves violence. Hence, Bhagavad Gita promotes violence. That's the kind of a thing that he was putting in front of in this 950-page long book. And he says, and he makes a very interesting acquisition, scandalous in some respects. He says that most of the time, till now, Gita is interpreted, which he calls as a Gunanuvada, which is not a correct thing. And he contrasts Gunanuvadas, all Anuvadas. He doesn't call his interpretation of Gita as Anuvada, but as Rahasya. He discards this word Anuvada. He doesn't like it. He says it is not Anuvadas, it is Rahasya. And what is the Rahasya of Gita? The Rahasya of Gita is fight war. That's it. Okay? And that is the message that you have. So with Tilak, what you have in front of you is there is Gita, and Gita promotes violence. Now, can you have a Satyagraha that promotes violence? So the combination of Satyagraha with violence is a combination that is available with Tilak. And that becomes a big problem. And that is the problem in front of Gandhiji. Gandhiji then, so now you come towards Gandhiji, and you find 2 important problems. One major problem. And what is the problem? Gandhi declared himself to be the votary of Ahimsa. He's the votary of Ahimsa. At the same time, he said, Gita is like my mother. Whenever I am in serious trouble, I consult Gita. And Gita is a text that promotes violence. So in other words, there is a big contradiction that Gandhi is an advocate of violence, and he embraces Gita, which is a text that promotes violence. It's the big problem. And Gandhi has to choose either or, either this or that. Gandhi says, I want both. It's almost like squaring a circle. Both of them are mutual,
exclusive. It is almost like squaring the circle. And he embarks on squaring the circle. And this is done by not an academician. It's done a person who is very busy politician. And this is what is undertaken in his essays on Gita. And what is the beginning of this essays on Gita? In essays on Gita, he says, there is something that is very important. He says that if the Gita is not a physical battle, it is not a historical event. There is Arjuna and there is Kauravas and Pandavas in each one of us. And there is good and evil in each one of us. And then, so this is about the allegorical. The word that uses is the fight between the Kurukshetra battle is allegorical. The Kurukshetra battle is that there is a good and evil in one of us. So we have to make sure that good wins over the evil. It is there in the text. But then that is a good argument. But I think it is not strong enough. It is not strong enough. And using this intermediary period of the Satyagraha till today, it is possible for us to, without text torturing Gandhi, add two more arguments in support of this squaring the circle, that is, in accepting both non-violence and also Bhagavad Gita. Okay. And that is, I use some resources from the text and I add two more resources from philosophy. One that I seek to add is from Sankhya philosophy. And second one that I seek to add is from Mahabharata. Okay, here I wanted to, this is not clearly available, but Gandhi says both Gita and Mahabharata do not endorse violence, they endorse non-violence. He makes a claim, but the claim is not validated systematically. And the support that he gave about the allegorical nature of it is not a very strong claim in my view. So to repeat again, without text torturing his essays on Gita, I seek to provide two important additional justifications, taking resources from Gandhi in support of this squaring the circle by Gandhi. One is metaphysical from Sankhya. The other one is hermeneutical from Mahabharata. Let me begin with the first one. The first one is, if you remember carefully, if you remember correctly, Gita does not have a metaphysics of its own. Gita borrows the metaphysics from Sankhya. In Sankhya, the primary gunas are, there are three gunas, Sattva, Rajas, and Tamas. Sattva is at the top, Rajas is in the middle, and Tamas is at the bottom. Now, if you ask Arjuna, if you ask somebody, where will the Krishna's asking Arjuna, who is reluctant to fight war, refer to? What will it refer to? Which guna? Sattva at the top, Rajas at the middle, and Tamas on the bottom. What is war? Is it Rajasic, Tamas, or at most Rajasic? At most Rajasic. It's not only Tamas, because interestingly, if you remember, Sattva is a combination of Tamas and Rajas. Sattva is not a negation of Rajas and Tamas. Because Sattva, in Tamas, there is no movement and there is no energy. In Rajas, there is energy, but too much of movement. Sattva is a quality which has no movement from Tamas
and movement and energy from rajas. So that's the another aside. So Krishna's advice, Lord Krishna's advice to Arjuna to fight war belongs to rajas. If you go by Bhishma Sani's, famous novel, Tamas, it belongs to Tamas. Okay, fine, both of them are fine. Does it belong to Sattva? Is the recommendation by Lord Krishna to Arjuna to fight war, does it belong to Sattva? Is there any statement in this typology where what Lord Krishna tells Arjuna belongs to Sattva? And which is the top guna? Sattva. That's why, following Gandhi, we can say that Gita is not a complete text. This is the point that I wanted to make. In order to find out what is the complete text, it is possible to move from part which is Gita, whole which is Mahabharata. Gita is a part of Mahabharata, which is called Jaya to begin with. Okay. Now, if you look at the both part and whole, can just take 5 minutes. If you move from part to whole, okay, you find both in Gita and Mahabharata the examples, incidents after incidents that promotes violence. That promotes violence. Okay. Gandhi seems to be saying you have to make two moves. One, move from, this there some part indirectly there in the text, move from, that's why he says in jail, I was very troubled about Gita, so I went back to read Mahabharata. I have a quotation, but because of lack of time, I am not going to give you, but I can share it with you. He goes back to read Mahabharata, and he finds that Mahabharata promotes not violence, but non-violence. That is very, very strange. And he doesn't give an argument. And I am trying to provide an argument to the claim that Gandhi makes. And the argument is that Gandhi can be seen as moving from content to context. What is the contents of Mahabharata and Gita? Promoting violence. But what is the context of the Mahabharata? The context of Mahabharata was that Janamejaya, who was the son of Parikshit, great-grand son of Pandavas, okay, was threatening to kill all the snakes to avenge that snake that disturbed his father's penance. And then Vyasa stops Janamejaya and narrates Mahabharata and tells him, your forefathers fought a war, and in that war, nobody was a winner because both sides lost people. So don't fight war. So this is the justification to say that Gita and Gita in particular, Mahabharata in particular, in general, is a text that promotes not violence. In fact, Gandhi says it denounces violence, but promotes violence. So now you find in this entire entire thing, a beautiful picture, trilogy. And what is it? Pre-Tilak's period, the India was in the state of tamas. Tilak uses Gita to inculcate the quality of rajas.
And then you have Gandhi, who seems to be saying, making a U-turn that we have to be Sattvic. Please remember two important points that is happening. There are two great hermeneutical feats by these academicians, these politicians par excellence. Both of them were in a relay race. Both of them are, it is not either Tilak or Gandhi. Both of them are in relay race. And then what is it that comes in front of us? What comes in front of us is too radical. I don't see as radical hermeneutical exercise as these people done in the world. One, Tilak, on the one hand, says that all the acharyas who interpreted Gita as promoting bhakti are part of Gunanuvada. And he, in fact, he says they superimposed their views on the text, which is, to use a modern terminology, it amounts to text torturing. So he's contesting all acharyas. It's a big radical team. This is the thinking India. This is the critical India. And you have Gandhi, who is now taking a U-turn from his guru, who is saying, you said it promotes violence. I'm saying it promotes non-violence. I think this is what I want to add to the idea of ahimsa, which can become, which the combination, which is necessary combination to put, to see non-violence as a basis for Satyagraha and saves us from non-violence in the company of violence. Thank you once again. Thank you so much for the enriching lecture, sir. I would now request the teacher in charge, Political Science Department, Dr. Rajendra Dayal, our collaborating department, to please give the vote of thanks. Thank you, Nakita. Respected Prof. Dinesh Singh ji, respected Professor Raju, respected Professor Manoj Sinha, my esteemed colleague, Professor Satish Jha, distinguished dignitaries and scholars, my esteemed colleagues and dear friends, I stand before you to perform a very pleasant duty of expressing vote of thanks on behalf of Gandhi Study Circle as well as Department of Political Science. We are extremely grateful to Professor Dinesh Singh to have given his consent and to be with us on this occasion. And it has always been a very learning experience whenever we have interacted with him. And we are very, very grateful for a very thought-provoking lecture that he gave here. We are also very thankful to Professor Raju for taking out time from his busy schedule and for having traveled all the way from Tirupati to here. And I think he has set the tone for the two-day seminar that we are having. And the way he has put forward the subject matter, I think it's very illuminating. It takes us into direction of debate and learning. I'm extremely grateful to Professor Manoj Sinha, our principal, for his academic leadership and for the support that he has provided us and at every moment. And wherever we find any difficulty, we get solutions from him. Last but not the least, this seminar is being sponsored by ICSSR, and our thanks to
that particular institution for giving us the financial aid. With these words, uh, let me thank you once again for being with us on this particular occasion. And from here, we'll take a break for about 10-15 minutes and then reassemble at the seminar room where we'll begin our first technical sessions. So with these words, thank you once again to all of you. Thank you, sir. I would request the guests and others to please move to seminar hall. We will start the session immediately. You can take your tea and move to the seminar hall. Thank you.